Hello and welcome back to the Clear Concept classes. In this session, we are going to write a program to check whether the number input by the user is a prime number or not. So, a prime number is a number whose factors are 1 and itself, which means that it will be divisible only by 1 and itself, and other numbers in between cannot divide them. Like if we have 7 and we are finding the factors of 7, it will be only 1 and 7. 1 और 7 के बीच में जो नंबर्स होंगे मीन्स 2, 3, 4, 5, 6 इनसे डिविजिबल नहीं होगा, राइट. देन 7 इज अ प्राइम नंबर, बट एनी अदर नंबर लाइक 6 इट कैनॉट बी अ प्राइम नंबर बिकॉज 1 एंड 6 के अलावा इसके और भी फैक्टर्स हैं. सो ये वाला प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है. So what we have to do, we have to write a program to check whether the number input by the user is a prime number or not. Okay. So the logic we will use, that will be, we will check its divisibility between 1 and the number. इसका मतलब ये है कि 1 और नंबर के बीच में जो सारे नंबर्स आएंगे उनसे हम इनके डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. इफ डिवाइडेड, अगर डिवाइड हो गया इट मीन्स कि वो प्राइम नहीं है, राइट. कि 1 और नंबर के अलावा किसी और से डिवाइड हो गया तो नॉट प्राइम, और अगर नहीं हुआ तो वो हो जाएगा प्राइम नंबर. दैट्स द कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग. सो लेट्स गेट टू द प्रोग्राम पार्ट. इट विल बी import java.util.star because we have to take input from the user, so util package यूज करना होगा. class prime check. next part will be the main function static void main and the string args. after that we have used the util package, so we have to create an object of the scanner class which will be created like this: scanner sc equals to new scanner system.in, right. next thing, we have to tell the user to enter a number for which the user has to check it's prime or not. So what we will do, system.out.println, enter a number to check, enter a number. The number user will input can be taken in int num with sc dot next int. Okay, we have got the number. Now what we have to do, we have to check its divisibility between 1 and the number, means excluding 1 and the number. So we will start a loop. Okay, before that I am using a flag, int flag equals to 0. Okay, later on we will discuss why we have used flag, but for time being int flag equals to 0. then for loop, and we have to check the divisibility between 1 and number, so we will start with 2 and go up till the number smaller than num I plus plus. Okay, and what we will check कि if the number is divisible by any number in between this, then it's not a prime number, right. So we will do if num modulo I equals to 0, it means कि num is divisible by I, and if it happens we will do flag equals to 1. we will print it's not a prime number. Okay, and we will break from the loop. Okay, and other cases we can just continue. and after the loop, देखिए flag, अब देखिए क्या हुआ था. we have used flag की वैल्यू 0 थी, जो अगर कभी भी वो नंबर डिविजिबल है बीच में किसी से भी तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, एंड अगर नहीं होता तो फ्लैग की वैल्यू चेंज होती ही नहीं. सो नाउ वी विल डू इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0,
अगर फ्लैग की वैल्यू 0 रह जाती, इट मीन्स कि ये वाला पार्ट कभी चला ही नहीं, दैट इज द नंबर इज नेवर डिविजिबल बाई एनी नंबर इन बिटवीन. सो फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी एंड इन दैट केस इट विल बी अ प्राइम नंबर. It will print prime number, and that's it. Main function end and the class will end here. Okay, now let's see. For example, if user has entered the value of num as 8, okay, so what will happen, we will make a flag variable as 0, and we will start the loop from 2, and next thing 2 is smaller than 8, condition true. We will get inside the loop and check this one. Num modulo I, 8 modulo 2 equals to 0. Is 8 divisible by 2? Yes, it is. So what will happen, flag will change to 1 and it will be printed not prime. We will break from the loop. So loop इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम बाहर आ गए और बाहर आके क्या चेक हो रहा है, flag equals to 0. Is flag 0? No, it's not. Then it will not be prime, and that's printed here. So this is what will happen in this case. Okay, so that's the code to check whether a number input by the user is prime number or not. The main part is this section. Okay, what we are doing, flag 1 एंड नंबर को छोड़ के मीन्स 2 से नंबर तक हम लूप चलाएंगे और कहीं भी अगर डिवाइड हुआ, फ्लैग को चेंज, नॉट प्राइम, ब्रेक, और अगर फ्लैग चेंज हुआ ही नहीं, इट मीन्स को प्राइम नंबर था, एंड दैट विल बी द कोड. थैंक यू.